I basically work at LinkedIn. I take care of the LinkedIn Talent Solutions business. I was taught political economy by Gopal Krishna Gandhi, who is the grandson of Mahatma Gandhi. Okay. एक आधा कोई कोर्स किया BCom कॉमर्स और हम बैंक में लग गए. Our parents just know this. At that time, arts लेने वाला बच्चा was considered duffer. What is the use of algebra? Did you solve a square plus b square plus 2ab? Most unconventional advice that you ever have given. All I say is look at your, let's say your years of experience is 5. You're making 5 lakh rupees. So the multiple is 1x. 6x is golden. Don't you think that ये coaching school level से हो जानी चाहिए actually? क्यों हम इतना ये कंटेंट देखते हैं सारा टाइम? पीपल कॉल इट फाइनेंशियल पॉर्न. 5000 की SIP अगर आप करते हो 200 साल के लिए करोगे, आप पोर्शा खरीद लोगे या व्हाटएवर. इट्स ऑल रबिश. Emotional intelligence का career growth पे कितना असर पड़ता है? फलाना आदमी तो बहुत अच्छा है, बटरिंग. मैं कहता हूँ why are you jealous? Be a part of it. सबको passion follow करना है. पेरेंट्स को नहीं है आपके ऊपर भरोसा तो 90% नहीं होगा. What is wrong in doing a job? Not everyone is meant to be an entrepreneur. नॉर्थ इंडिया में ना एक ये ट्रेंड कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे. सरकारी जॉब मिल जाए तो ठीक है. They use a term corporate slavery. Government slavery कभी नहीं बोलेंगे वो. What is that movie? 12th fail. कितनी हिट. मेरे हिसाब से तो बकवास मूवी थी, एकदम बेकार. 25, 30, 40 करोड़ की सैलरी कमाने के लिए 2, 3, 5, 10 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है. प्रिपरेशन में पैसा नहीं है, प्रिपरेशन कराने में पैसा है. एवरीवन हैज अ स्किल. ओनली थिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट इज व्हाट इज समथिंग दैट कैन बी मोनेटाइज्ड. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट. 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की जो जॉब होती है, ये लोग ज्यादा हैं, तभी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. अगर माइक्रोसॉफ्ट 6,000 लोगों को ले ऑफ कर रहा है, फॉर अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट व्हिच हैज मोर देन 2.5 लाख पीपल इज जस्ट 2%. बात करें किसी एम्प्लॉयर से, उनकी प्रॉब्लम रहती है दैट वी आर नॉट गेटिंग गुड एम्प्लॉइज. किसी भी कंपनी खुद का रिक्रूटर हायर नहीं कर पाता. Can AI and automation replace these careers? Sustaining careers is super difficult. 30% of jobs will be like gone. Hi Deepak. Hi Nitya. Welcome to TNT Show podcast. Thank you so much. My pleasure. Thanks a lot for inviting me. And thank you so much for coming so far. No, my pleasure. My absolute pleasure. It was a wonderful drive and really had a good time to get here. I needed some time out, given my schedule. Okay. So please tell our audience that what you do. All right. So I basically work at LinkedIn right now. I'm a senior account director. From a corporate perspective, I take care of the LinkedIn Talent Solutions business in the North and East Indian market. What that basically means is I help organizations outside of LinkedIn to basically look at solutions such as recruitment, branding, and learning. So any organization which wants to hire the best talent from LinkedIn, any organization which wants to upskill or reskill their existing employees, and any organization which wants to brand themselves on the platform, they come to me or I go to them, whatever you want to call it, and that's my main job. Okay. And other than that, I also run a job strategy and career coaching practice. Okay. Where I've helped thousands of individuals across 5 continents to kind of get their next best role. Okay. And this involves, looking at where their careers are currently standing and what is the next best possible move they can make in their life. Right. So that's what I also help in my personal capacity. So it's your side gig then. Yeah. So I don't know what side gigs are anymore because given our current economic, conditions in India, the way, the world is kind of moving, I think it's all mixed in one now. I think most of the people are kind of looking at various avenues to kind of further their career and move to the next level in their career. Yeah. So how did this career coaching thing happen? So it all started with a call that came from a placement committee of my alma mater. So while I'm an engineer, studied from a college called Thapar University. Okay. But a lot of people who know me also know that I am a liberal arts graduate after doing engineering and MBA. Okay. You'll not find a lot of people in India who would have, usually they do a conventional route. They go to engineering,
do an MBA and then start working, whatever best job they get. What I did was I did both of these things, but then I decided not to take up a job, and rather I wanted more education, like real education at least. That's how I put it in my words. And that's where I went to this college called Ashoka University, which is the only liberal arts or one of the biggest liberal arts university in India, where I did this course called Young India Fellowship, which basically puts about 200 people from across the country together. You have doctors, lawyers, engineers, people from IITs, IIMs put into one cohort, and they learn various subjects from public policy to economics to law to history to art appreciation, for example, or for that matter, history of Indian, let's say politics or Indian economy and so on and so forth. And so basically they put bunch of very smart people together, and they also get the best, the best people to teach them. So for example, I was taught political economy by Gopal Krishna Gandhi, who is the grandson of Mahatma Gandhi, right? Or for example, public policy was taught to us by Mihir Shah, who was at the time the Planning Commission of India ka head. Okay, right? So you get exposed to extremely good, subjects, extremely good network. Yeah. And so cutting the story short, so that college, after I graduated, went on to my career, about couple of years or about 2.5 years back, placement committee calls me and says, why don't you take a lecture? You now work at LinkedIn. It's one of the best brands in India. You're doing, whatever it took you to kind of get there. We want you to come back to college and take a session. Now, when I went there, I realized there are these amazing, smart people, but all they've done is they've kind of studied some subjects that are being taught in the university. Right. But they lacked real practical education on how to really thrive in the market. When I say market, I mean to say the job market, right? How to really thrive, how to get a job, how to talk in an interview, or let's say what is the best kind of job they should be taking up, right? Right. So just so many questions. I was flooded. I was overwhelmed by the kind of response I got. I mean, more than the room was about 100 people. People were waiting outside to kind of understand, okay, there's somebody who's kind of taking this lecture on, jobs and careers and stuff. That's when I realized that this is something that I can do to help, people other than, this university students. And that's where the Eureka moment came, and I started, working with a lot of individuals on a personal capacity to get them further, right? So you actually did a very unconventional thing. Yeah. So that is why you're continuing that thing, right? Absolutely. So every 3-4 years, I kind of make sure that I'm reinventing myself. And, so you started this thing, and now you're coaching many people, many professionals. But don't you think that ये coaching school level से हो जानी चाहिए actually? I mean, yes, absolutely. You're kind of picking the right nerve of the conversation. Because when I was in I think in 10th standard, I got very good marks. Okay, then I had only 2 options, medical and non-medical. But I was very good in Hindi as well. I see. Now I think अगर मुझे अभी decision लेना होता, maybe कुछ और होता. But at that time, arts लेने वाला बच्चा was considered duffer, like कि नहीं ये तो नहीं है. I've heard that. And even मेरे school में stream भी नहीं था available +1 +2 में arts. So don't you think ये guidance उस time हो जाना चाहिए that ये options है, क्योंकि हमारे सामने 4 या 5 options थे that either if you do this non-medical thing, you will be pursuing engineering, then कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं लिमिटेड से, एंड देन यू कैन डू दिस कॉर्पोरेट जॉब्स, एंड अगर मेडिकल लेते हो देन यू विल बिकम अ डॉक्टर. एंड आर्ट्स का कुछ पता ही नहीं था कि कुछ हैवी करियर ऑप्शंस. डोंट यू थिंक ये स्कूल लेवल से हो जाना चाहिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है? Great question. So I think it's a structural problem. It's not just about education problem, okay? Let me break it up for your audience that, I think to give them a new perspective on how to think about this. Yeah. Now, typically, we are a very young country. So we are like 75-year-old or young, whatever you want to call it. Yeah. If you compare it with developed countries, they're
300, 400, 500 year old, right? US, for example, it's almost, what, 250 years, more than 250 years old now. Now, we are a baby as far as, if you compare it with these countries, right? Now, whenever, such countries like ours, they start to prosper, there is a very large amount of time that has to be spent on building up its base. When I say base, things like, getting people educated, for example, right? Or doing basic things like, getting civic amenities in place, getting your, let's say, legal structure in place, education policies are made, and so on. So when 1947 happened and, India gained its independence, so there was this, civil services structure that was taken from the British, and it landed, in our lap, and we kind of still continued with that till day. Now, in that structure, what you need to understand is that for that time it was enough, because most of the population was extremely poor, not educated, and there was this babus, as they call it. They were kind of the elite who would have jobs. They would report into the politicians, and they were tasked to kind of really put everything together for the country, and so on and so forth. Now, 50s, 60s, 70s was the period of socialist India, which meant that a lot of grassroots level stuff happened. You would basically go to school. Most of the jobs, etc., were government jobs. Because the socialist or the DNA of a socialist country is that you can't have a lot of push towards privatization. So it's mostly government, single, one control, and so on and so forth. Now, what that does is it puts a lot of, let's say, wealth or a lot of opportunities in only one sphere, which is, let's say, getting a government job, for example. Now, our parents, especially people who now call themselves middle class, upper middle class, their parents, so our parents were not very middle class also. They in fact, for that matter, a lot of your viewers, if they really go back to their family tree, maybe their grandfather did not have a mode of transportation, right? Now, for them, the only thing that they had an idea was कि यार get an education, पढ़ाई कर लो कुछ ना कुछ, स्कूल चले जाओ, जॉब सरकार देती है, वो जॉब लग जाएगी. तो you would have heard अपने पेरेंट्स को कि हमने तो वो इंग्लिश की वो डिग्री की एंड हम टीचर वहाँ लग गए, हमने एक आधा कोई कोर्स किया बीकॉम कॉमर्स और हम बैंक में लग गए एंड सो ऑन सो फॉर्थ. सो दिस डीएनए, आवर पेरेंट्स जस्ट नो दिस. Exactly. And these people who run schools, they are also from that particular school of thought, because that's who they are, 50s, 60s, principals. So that you remember your principal. It might not be somebody who's 30-year-old, very educated, definitely well educated. Not, yeah. It's mostly somebody who's, let's say, a little older than usual, right? Let's say your parents' age, etc. Now, for them, that was the only avenue to grow, right? And like I said, it's a structural problem. It's just continued. There is no innovation that happened, in the education policies. For example, you're still taught, let's say, algebra. What is the use of algebra? Do you remember? Did you solve a square plus b square plus 2ab का कभी equation है, quadratic equation जिसको कहते हैं, a plus b का whole square? I remember because it just stuck, right? But you never used it again. So what I'm trying to say is that while the world moved on, while the country moved on from a socialistic bent of mind to post-91, liberalization, LPG privatization, reforms, globalization, and then prosperity came, wealth, started growing in. But the mindset, the socialist mindset in the education policies did not really evolve. Yeah, exactly. So I think that's the structural problem, is how I would put it. So I hope that answers your question. I know I took a very long detour into the history, but that's actually what the main we have problem discussed this thing in one of our podcasts also, that earlier
India was I think, the educational center, epicenter of everything back when we were not invaded by the Britishers or any other Mughals or Sure. anybody. So back then India को देखा जाता था because we had this Gurukul system of education, जहाँ पे actually education के अलावा we were taught life actually, जो अभी नहीं सिखाया जाता. So I think Britishers came, and in that episode also the guests, they actually discussed this thing कि हाँ इस तरह से invaders आए and they destroyed our education सबसे पहले to rule us, right? Right. So yeah. So as we discussed that you did this unconventional thing. So what's one that most unconventional advice that you ever have given to somebody for their career or anything? Right. So I have a very simple rule. So here's the thing. We live in I think, abhi lower income economy, lower income country. I think $2,500 is our, basically per capita GDP will grow to maybe $5,000 in the next 15-20 years. So by all stretch of imagination, we're a low income economy, right? Now, whatever my clients that I meet, or let's say in my day-to-day, let's say conversations with professionals, youngsters, colleagues, peers, all I say is look at your income. Okay, always have a right eye on what you're making, because India is nothing but an amalgamation of. So people say, okay, we are 150 crore people. Yes, we are 150 crore people, which means if you divide it by 4, we are 40 crore families. Out of the 40 crore families, let's say most of the middle class and upper middle class would be, which is taxpayers in India, is around 3 crore, to 2.5, 3 crore taxpayers. So let's take 2.5 or 3 crore families. So if these 2.5, 3 crore people are able to increase their income, then India will automatically prosper, right? Now, if you look at how an income is increased, there is a formula that I always use. Let's say your years of experience is 5. Okay. And you're making 5 lakh rupees. So the multiple is 1x. Okay. If you're making 10, the multiple is 2x. If you're making 15, 3x, and so on and so forth, right? Now, somebody who's at a 1x multiple is like extremely, extremely poorly paid. Okay. So somebody who's, let's say, 10 years of experience, still making 10 lakh rupees is, by all stretch of imagination, extremely underpaid and poorly paid, might not really, make a lot of money in their careers. Somebody who's at 2x is averagely paid. Somebody who's at 3x is good. 4x is excellent. 5x is great. 6x is golden. Okay. Now, I always tell my peers or clients, whatever, look at your income. You know your income. Everyone knows their income. You know your years of experience. Just look at what your multiple is right now at any given stage in life. And just see how can you get to the next multiple. Now, if it takes you to quit your job right then and then, you should do it, because otherwise it will be very difficult for you to kind of make a lot of money, because mostly people just struggle with figuring out how to do their job. How to get a better job is extremely difficult for them. Right. So if you ask me unconventional advice, it is unconventional yet very conventional to kind of look at things in a very structured manner. Mostly people, what they do is they haphazardly, look at their careers, look at, how will they grow and so on and so forth. What I do is I bring structure into conversations and I bring structure in their thought process. Right? अब usually आपने देखो SIP करते हैं, क्यों हम इतना ये content देखते हैं सारा time? People call it financial porn. कि यार सारा time वो figure मैंने 5,000 की SIP अगर आप करते हो तो आप ये 200 साल के लिए करोगे, आप Porsche खरीद लोगे या whatever. Right. Who will live for 200 years, right? But still people watch it. Why? Because उनको एक sense of comfort है कि यार ठीक है, जो भी मेरी salary है ना, उसमें 5,000 निकाल दूंगा यार, eventually it will grow. Right. 12, 14, 15%, 2% extra करने से इतना बढ़ जाता है. I'm sure you would have seen that content. It's all rubbish, right? Because it gives you just sense of comfort कि हाँ हो जाएगा, देख हो जाएगा. उम्मीद आती है, right? उम्मीद आती है. But the problem with just having false उम्मीद is कि वो 5,000 से नहीं होगा, आपको income बढ़ानी है. वो 5,000 करने से nobody is going to kind of grow mostly.
मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो वो सब, मैं कह रहा हूँ बट द थॉट प्रोसेस हैज टू बी. तो स्ट्रक्चर अगर किसी को दिखा दो तो वो खुश हो जाता है एक तरह से. अगर आप देखो ना इसमें भी क्या है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर, ये देख के लोग खुश होते हैं. सो मैं यूजुअली यही कहता हूँ कि इन चीज़ों में स्ट्रक्चर ना देखो, बिकॉज अगर आपने पैसा कमा के इन्वेस्ट करने में ही आपका सारा ध्यान है, तो पैसे कमाई पे ध्यान नहीं जाओगे तो वो नहीं होगा. तो इस पे 5% ध्यान दो, इस पे 95% दो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए. लोग उल्टा करते हैं. राइट. सो दैट इज अनकन्वेंशनल थिंग टू से. यूजुअली लोग फाइनेंस ये वो बात करते हैं, मेरे को वो समझने में मुझे ऐसा लगता है कि somebody who's very rich, they'll not care about कि 1-2% ऊपर नीचे and all of that. They'll say कि यार let me just make more money, because if there's an infinite supply of money, it doesn't matter if I grow my money at 10% or 11% or 12%. Yeah, right. Yeah. So that's so basically one should increase their income instead of increasing their savings. Right. Yeah. I mean, savings automatically बढ़ जाएंगी ना. अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो एक नॉर्मल घर की खर्चा है 1 लाख रुपीज है मान लो फॉर एग्जाम्पल मंथ का, और उसकी इनकम 2 लाख है, तो सेविंग्स 1 लाख हुई. अब मान लो किसी तरह वो 10 लाख हो जाती है महीने की सेविंग, तो खर्चा ऐसे नहीं है कि 9 लाख ही हो जाएगा सीधा, वो 1 से हो सकता है 1.5, 2, 2.5 हो जाएगा. तो सेविंग्स तो अपने आप बढ़ गई ना. सो लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो सिर्फ आउटकम पे ध्यान देते हैं, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते कि आउटकम क्या है, मेरी सेविंग बढ़ जाए. सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा इवेंचुअली एक पॉइंट से ज्यादा आप नहीं कर सकते. मतलब मन ही नहीं करेगा, कितना करोगे. राइट. सो दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट. इमोशनल इंटेलिजेंस का करियर ग्रोथ पे कितना असर पड़ता है? बिकॉज बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनकी बनती नहीं अपने मैनेजर से, बॉस से. सो डज इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल? Absolutely, there is no doubt about it, and I'll also tell a lot of my clients, कहते हैं यार फलाना आदमी ये तो बहुत अच्छा है in like buttering and he's good at office politics. मैं कहता हूँ why are you jealous? Be a part of it. Learn from it. Take her for a dinner. Ask यार I really want to learn, how do you do it? You're a darling of the boss. How do you manage? See, if somebody is good at something, even if we all know this works, we're all humans at the end of the day. Yeah. And you can't teach emotional intelligence to somebody. You have to pick it up with exposure, with talking to people, with figuring out what works, what doesn't work, etc. Right? So talking negatively about such people, I think is the biggest disservice you can do to yourself if you're a corporate employee. Okay. Rather, a better way to do it is learning from them. Right? That's number 1. Number 2 is it's super important. जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 6 तरह के लोग होते हैं, जो मैंने बोला था वेरिएबल एज के साथ. 4 के बाद जो 4 होता है, जैसे कि मान लो जिसकी 10 साल की एक्सपीरियंस 40 लाख सैलरी है, 50 लाख और 60 लाख है. तो ये जो 4, 5, 6 है ना, इन तीनों की स्किल लेवल सेम है. ठीक है. इन तीनों का बैकग्राउंड सेम है, इन तीनों की कंपनी सेम है. राइट. बट फिर भी एक बंदा 50% ज्यादा सैलरी कमाता है. क्यों? क्योंकि वो जो 6 है ना, वो ही नोज हाउ टू रियली मैनेज हिज मैनेजर. ही इज अ डार्लिंग ऑफ द CEO. ही नोज हिज मैनेजर्स मैनेजर रियली वेल. ही hangs out with them in the parties. He cracks jokes with them. He knows how to kind of really be in the limelight for all the right reasons. That's why he's golden. Because he's visible or she's visible. Or whereas on the other hand, the 4 is also very skillful, does the same thing, but doesn't care, doesn't go to any parties, doesn't like really mingle with his peers, with his manager, doesn't even know like when is his manager's birthday, for example. So hence makes less money. It's very, I know it sounds a little very very superficial, but it is the reality in life. अभी कुछ सालों से आई थिंक मिलेनियल्स एंड जेनजी में स्पेशली देयर इज़ दिस पैटर्न सीन कि सबको पैशन फॉलो करना है. सो देर आर मैनी पीपल जो अपना बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के इस चीज़ में आ भी रहे हैं. सो डू यू थिंक ये सही है? ये थोड़ा लोडेड है क्वेश्चन. सही और गलत कॉन्टेक्स्ट में पता लगता है. राइट. अब मान लो मैं 20 लाख रुपए कमा रहा था अपनी जॉब में, और मैंने कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे को 50 लाख रुपए में कमाने लग रहा हूँ बाहर, और मेरे को ये जो जॉब है ये मेरी इट इज़ कमिंग इन बिटवीन ऑफ
लेट्स से व्हाट आई वांटेड टू डू, और मैं हो सकता है उससे इनकम मेरी और बढ़े अगर मैं जॉब छोड़ दूं. इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. अब बात आती है कि पैशन कि मेरी एक जॉब अच्छी खासी चल रही थी और मैंने जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज आई हैव सम पैशन, आई वांट टू फॉलो दैट. मैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. वो कैसे पता लग सकता है कि वो पैशन चलेगा या नहीं चलेगा. कैसे? गो टू योर पेरेंट्स, आस्क देम I need 20 lakh rupees for this or whatever money. You become the first funding, like वो कहते हैं ना VC funding. So rather than going out first to any VCs, any whatever, ask your father. ठीक है. If he is funding, तो most likely कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका. अगर उन्होंने कह दिया ना कि यार क्या मतलब ये तो मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं, किसी और से मांग ले, तो मतलब अगर आपके फादर को आप पे या पेरेंट्स को नहीं है अपने आपके ऊपर भरोसा, तो मैं ये नहीं कह रहा आप कर नहीं सकते. 90% नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को. बट ये थोड़ा जोक वे में मैंने बताया आपको. बट देखिए पैशन और काम ये ना बहुत आजकल मिक्स एंड मैच हो गया इसका. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप एक बुक लेके अपने सिर पे थोड़ा दूर चलिए कि मैं बैलेंस करूंगी, मैं पैशन भी फॉलो करूंगी, मैं अपना पैसा भी कमाऊंगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि सारा ध्यान आपका बुक की तरफ चला जाएगा कि ये बुक गिर जाएगी. यू नो आई विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ यू नो गो वेरी फार, राइट. सो इफ योर पैशन मेक्स यू मनी, it's very simple, okay, and you don't have to balance so much stress on your head, then it will work. If it is not making you money or will not make you money, no, people are not able to fund you or not trying to fund you or not, let's say, even accepting you as somebody who can make it, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हाँ, ईगो पे कोई लेने के लिए हम करें तो वो अलग बात है. बट अगर हम 100 लोग उठाएं तो 99 लोगों का पैशन अगले दिन तक ही ठंडा हो जाता है जब वो पैसा नहीं आता. क्योंकि जॉब करना फॉर एग्जांपल आपको एक पता है कि महीने के एंड में मेरी सैलरी आएगी, वो होगा. बट वंस यू जस्ट लाइक डोंट गेट इट फॉर सम टाइम, यू स्टार्ट टू रियलाइज कि मे बी इट्स नॉट एज रोजी एज people say, Instagram says, social media says, and so on and so forth. What is wrong in doing a job, right? You're stable, you get some salary and so on, and not everyone is meant to be an entrepreneur. Right. While it looks fancy, sounds fancy, you ask yourself, you're self-employed. It's the most difficult thing to do in the world because you have to be answerable to yourself, you make money on your own. There's nobody looking out for you. There's no paycheck coming. You know all of that, right? So I think if you add all of what I said, starting with parents, right? If they tell you कि हाँ मैं नहीं पैसे देता, तो it's a first sign. ठीक है. Secondly, it's about balancing कि मैं passion भी और पैसा भी, तो वो थोड़ा सा अगर आपको टेंशन हो रही है कि वो नहीं मैच होता, मिक्स होता, तो मोस्ट लाइकली दैट्स नॉट द राइट वे टू गो. एंड थर्डली इट्स अबाउट, अगर आप अपने पेचेक की आदत है आपको और आपको टेंशन हो जाएगी 1-2 महीने में, तो आपकी हालत टाइट डेफिनेटली हो जाएगी इन सम टाइम, बिकॉज देन यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स टू काइंड ऑफ बिकम एन एंटरप्रेन्योर. और पैशन, अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी, like I could be very passionate about, let's say, driving motorcycles. Okay. Right? But can it be converted into some income? That's what I have to first think about, and then test it. Test, pilot. Then many of them become travel vloggers ना, bike पे लेके लद्दाख निकल जाएंगे. Correct. No, that's true. Yeah. That's absolutely true. But then what I always say is कि यार test करो उसको कुछ साल, महीने. If it makes you money, then do it. If it's feasible, because nowadays what also happens is in your 20s you kind of do it and then you realize कि अच्छा शादी भी करनी है, घर भी लेना है. अब लोगों को ये नहीं पता कि घर लेने के लिए you need मतलब एटलीस्ट सैलरी स्लिप्स और ये सब easy होता है थोड़ा सा. I don't know आपके व्यूअर्स है कितने होम लोन लिया है, तो होम लोन लेने जाओ ना तो पूछते हैं अच्छा आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड हो. सैलरीड हो तो फटाफट हाँ 3 ये सैलरी स्लिप, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दिन में हो जाएगा. सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई
गॉड नोज कैसे मिलेगा वो लोन, क्या होगा, कैसे वो, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा. सो देयर आर वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. शादी में करने जाओ, अच्छा क्या करते हो आप, जॉब करते हो, तो सम लेवल ऑफ लाइक पीपल आर एबल टू काइंड ऑफ कहीं स्टेटस आपका लगा देते हैं कि ये स्टेटस है, ये इस पर्टिकुलर कंपनी में है, इस सरकारी जॉब में है, इस तरह की इसकी सैलरी होगी, ये मोटा मोटा स्किल्स हैं, इस शहर में रहती है, फॉर बोथ जेंडर्स. बट अपने बिजनेस में तो एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया पीपल थिंक यार पता नहीं होगा क्या नहीं होगा. सो द मैरिज मार्केट ऑल्सो यूर लाइक यू फॉल. ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं व्हेन यू रियलाइज दिस लेटर इन लाइफ. सो आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, जस्ट टेस्ट इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. It works great. If it doesn't, it's not meant for everyone. And मतलब ज़रूरत है ना, मतलब वर्कफोर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया में. And it's not, I think नॉन सेक्सी है ना जॉब करना भी. तो that's the biggest issue. नॉर्थ इंडिया में ना एक ये दिस ट्रेंड, वी कैन कॉल इट अ ट्रेंड ओनली, कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे. ये बहुत ज़्यादा, आई मीन इस वाले बेल्ट में तो ज़्यादा है ये, कि गुलामी तो नहीं कर सकते हम किसी की, बल्कि कुछ और क्या करना है उसका आइडिया भी नहीं है. पर ये मेंटालिटी कब बदलेगी, क्योंकि अभी भी है ये दिस, आई थिंक ये ईगो है या फैमिली बिजनेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को करना ही नहीं है कुछ. बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है यहाँ पे डेफिनेटली, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. क्यों है फिर ये मेंटालिटी? तो दो चीज़ों को मैं एड्रेस करूँगा इसमें. क्यों है से पहले क्यों हुआ, इसको एड्रेस करेंगे पहले. एंड सेकेंडली जो आपने अनएम्प्लॉयड वर्ड बोला ना, उसके पहले एक फिल इन द ब्लैंक को भी फिल करेंगे, उसको बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो एक पहले सोचते क्यों हुआ. ठीक है, गुलामी वर्ड. Yeah. So gulami as a word in our DNA has come from our, we were a gulam of a particular country, Britishers ruled us and so on. तो मैंने आपको शुरू में बताया था there was this particular socialist this thing, और हमने ग्रो किया. एंड तो उसमें एक मनसबदारी सिस्टम था. during it started during the rule of Mughals when they came here. So it is a way of kind of, mansab is basically rank, right? So it's a way of actually controlling your civil administration, and also to kind of look at how to basically run your kingdom slash nation and so on and so forth. तो वो लोग क्या करते हैं कि क्या किया उन्होंने अलग अलग रैंक्स दे दी लोगों को, और उनको एलीट लोगों को ही दिया, या एलीट बन गए वो रैंक से. उनका क्या था, चाबुक मार के लोगों को चलाना. ठीक है. सो दिस ट्रांसेंडेड इट टू आवर डीएनए. Like I said, we are a very young country, and especially North India. Why? Because if you look at all the battles that have been fought, all of those battles have been fought on this border area. Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, राजस्थान. सो दिस बॉर्डर एरिया, साउथ में इतना नहीं है बिकॉज वो नहीं वॉर लड़े वो. सो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है कि हमें ना डीएनए में गुलामी करनी ही नहीं है किसी की. लड़ाई भी करी है खूब, एंड सेकंड ये मतलब चाबुक मारना, एंड एक एनार्किस्ट थॉट है ये. येट सरकारी जॉब मिल जाए तो ठीक है ना, ये ना सरकारी जॉब इज आई एम फाइन, आई एम हैप्पी. वाई? बिकॉज ऑफ दिस रूटेड डीएनए कि यार सरकारी जॉब में आई एम पावरफुल. अब दिखा देंगे. वो मूवी आई थी एक, व्हाट इज दैट मूवी, दिस मूवी केम नो which basically had this guy who became an IAS officer and was like, अब दिखाता हूँ उसको and all of that. What is that movie called? शादी में जरूर आना, I think. No. So it was this guy. I think 12th Fail. हाँ, 12th Fail. Fail. अब उसका पूरा मूवी का कितनी हिट, मेरे हिसाब से तो बकवास मूवी थी, एकदम बेकार. ओके, वर्स्ट मूवी एवर. इफ यू मतलब इट्स द वर्स्ट मूवी एवर. व्हाई? बिकॉज इट मेक्स आवर प्रोडक्टिव ऑडियंस, or sorry, productive youth of this country to not be productive. It promotes that. Why and how? यार simply वो ये दिखा रहा है कि यार मैं तेरे को दिखा the rooted sense of becoming somebody's IAS officer, and the assumption, or let's say the motivation of becoming that IAS officer is to show somebody that now I'll kind of show you the your place in the hierarchy and stuff. So what that does is, most of the youth which is kind of unemployed right now the government is also happy because it's okay,
we don't have enough jobs, so let them study, keep studying as much as they can, और दे दो attempts, और दे दो and movies like this बिल्कुल कबाड़ा कर दिया. कितनी पॉपुलर हो गई, कितनी हिट हो गई, बट इट गेव एन एस्केप रूट. इट इज एन एस्केप रूट, राइट, कि हाँ मैं मतलब प्रिपरेशन कर सकता हूँ ना सरकारी जॉब की तो एटलीस्ट, और वो देख 12th फेल बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा. बट आपको भी पता है कितनी 200-250-300 जो रियल IAS IPS IAF है, उसके बाद तो फॉरेस्ट क्या क्या आ जाता है, जो IRS हो 250-300 लोग हैं उसमें भी. जो अटेम्प्ट देने वाले बच्चे होते हैं आई थिंक वो लाख क्रॉस होते हैं. करेक्ट, लाख नहीं, लैक्स. एंड आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. तो 200, 250, 300 IAS या IFS या IPS बनते हैं. कितनी सैलरी होती है, मतलब मान लो आप इनिशियली आई थिंक इट्स 55 प्लस करके 1 लाख लगा लो, सब कुछ लगा लो के, into 12 is 12 lakhs, into 200-250 people is how much? Not much, right? It could be let's say 12 करोड़ 100 लोगों का, तो 25-30-40 करोड़ की सैलरी साल की. उस 25-30-40 करोड़ की सैलरी कमाने के लिए 2-3-5-10 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो विल हैव टू फिगर आउट, आप गूगल कर लेना. बट इट्स इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. ठीक है. व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट इंडिया? कि प्रिपरेशन में पैसा नहीं है, प्रिपरेशन कराने में पैसा है. ठीक है. सो एंड दैट पॉइंट अबाउट, आई थिंक यू रेज्ड अ क्वेश्चन अराउंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. आई सेड कि अच्छा एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. So you said business family and stuff like that. See, business family का क्या होता है ना? If somebody is, let's say, somebody's father has a business, makes 5 lakh rupees a month, 2 lakh rupees a month, 3 lakh rupees a month, let's say, and the son or daughter is not able to get a job, कि नहीं मेरे तो business है father का, मैं वही join करूँगी whatever, and that after joining, the business doesn't increase by even a 1 rupee. या 3-4-5 लाख तो है, but it is enough for the family to run like it was running. But it is for the society, it is shown कि हाँ यार ठीक है business में आ गया ना, वही कर रहा है ना. But is it really adding up if, because that person might get married eventually and so on, so the 2 families eventually they'll come out of that one family. Is that business growing or adding value? Yeah. If somebody joins, because let's say if somebody has nut bolt की factory या फिर लेट्स से कुछ भी बिजनेस करते हैं आजकल लोग, मान लो इलायची का बिजनेस है या फिर किसी की ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है. मैं बिल्कुल ही नॉन सेक्सी कन्वेंशनल बिजनेसेस की बात करूँगी. नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं ये बिजनेसेस, राइट. नाउ इफ समबडी जॉइन्स दैट शॉप, व्हाट वैल्यू विल इट एड? You became an engineer, you did an MBA. I'm not saying it's bad or wrong. But if you really think about it, is it adding value to that business or increasing revenue? If it is, and it is increasing not even revenue, profit by a particular number which is lesser than the, let's say, or more than your salary that you would have eventually get, by all means, it makes sense. But do people even think that much? Is my question to the audience. कि आप ऐसे सोचते हो या फिर mostly it's again an escape route कि ठीक है मैं मतलब ये तो है ही ना, as a backup plan. Yeah, exactly. And again backup plans and all of that are again a myth. Backup plan कुछ नहीं होता. Plan होता है और आप fail हो जाते हो मान लो, उसके बाद तो आपको लोग बता देते हैं कि ये कर लो वो कर लो. तो backup plans मैंने usually देखा है कि आप सोचते वो है but वो एक तरह से एक मुखौटा है या फिर एक let's say it's kind of hiding the insecurities of that person कि मैं I could not make it. So I think that's my take. I know it's a little controversial to think like this, but disguised unemployment एग्रीकल्चर में यूजली ये तो बहुत नोन सी बात है कि हाँ ये होता है कि मतलब 1 acre of land had one person working on it, and then eventually 2-3 more people came and did the same thing, but the output did not increase. Similarly for businesses, is it the same or not? And then I've also had consultations where like people who let's say were in their family business are not able to kind of have their own identity also after let's say 5-10 years also. Everything is with the boss man, their father, whatever.
and they do not have any autonomy in the business. They do not know how to get money out, invest themselves, do something on their own, which typically somebody who, let's say, is independent can do, right? So there are practical issues as well with this, but I think आपने क्वेश्चन पूछा क्यों है ऐसा, क्यों है वो इसीलिए है because it's a good garb of showing that okay, I am okay, it is fine, there's some backup, like I said, because they use a term corporate slavery, right? गवर्नमेंट स्लेवरी कभी नहीं बोलेंगे, वो कॉर्पोरेट है तो आई थिंक वो उनको लगता है वहाँ पे तो स्लेवरी है. Government jobs, they respect them. North India में especially. Yeah. So as you mentioned about this movie also, have you ever consulted any UPSC aspirant? जिसका all the time. All the time. तो UPSC aspirants मेरे पास जो आते हैं ना, वो वाले नहीं आते जो अभी जोश में है. ठीक है, वो जोश वालों को मैं कंसल्टेशन देता भी नहीं हूँ. उनको मुझे पता है वो नहीं मानेगा, क्योंकि जब आपका खून गर्म है, आपको आपने 12th फेल देखी है अभी, ठीक है, तो आपका अभी आपका टाइम है उस सिचुएशन में आने में, जब आपको लगेगा रियलिटी हिट करेगी. ओ माय गॉड, आई एम वेस्टिंग माय टाइम, माय लाइफ, बट 20s आर गोइंग. The 20s are very productive, you know, you've set your base, etc. in life. I usually do consultations for people who are like lost, who've done 4, 5, 7 years, given it all, you know, it's still not working. Over Some 20s, Mukherjee Nagar, you know, shanty they're living in, or in their house they're living. वो उसके parents गाली दे रहे हैं उसको कि क्या है यार, 5 साल हो गए, कुछ तो कर, या फिर false hope दे रखी है उसको अभी भी कि नहीं हो जाएगा, एक और बार. So I usually consult these cases, and in most of the cases what happens is they're not sure. Like what they come up with is, hey, I am really looking for an exit from this, but I don't know what to do because I've lost a lot of my years in life. Let's say I graduated at the age of 21, 22. I started preparing for UPSC. Now I'm 28, 29. I have no real skills. What do I even do, right? So that's where people like me come into the picture. I show them, okay, you know, this is how the market perceives you. This is how you can upskill. These are the kind of jobs you can start with. And then this is how it'll look like 3, 4, 5 years in the future. This is a career plan for you. This is how interviews are given. This is how a CV is made. This is how a LinkedIn profile is made. You know, this is how a salary is negotiated, because for a lot of them, they've never made a salary. Yeah. So I think so UPSC lot is very interesting because most of them are very clear. By the way, they're smart. ठीक है, वो इतनी पढ़ाई करके smart in the sense they know कि ये काम तो नहीं, ये तो नहीं होगा अब. ठीक है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये तो होने वाला नहीं है. बस मुझे अब ये फिगर आउट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. A lot of time people I see वो कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूं. मैं कहता हूँ यार पढ़ा ले फिर किसी को, या तो पढ़ाई ले किसी आने को. वाले यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत सारे आई हैव सीन दिस थिंग कि जो खुद यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो जिनका क्लियर नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो टीचर बन जाते हैं. मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू. If you don't want to see, according to me, you should have practical corporate experience, good number of years of experience under your belt, because it gives you exposure, it gives you, you know, 2-4 लोगों से बात करनी आती है आपको, you know, you have the right experience of talking to different kind of people, and you become smart, you get ideas, and you can do whatever you want to do. Even if, you know, if you're meant to do big things, you will eventually do big things. This is how I feel about it. But if you don't want to, some people say कि नहीं, गुलामी वाले नहीं करना मेरे को ये, ठीक है, मैं इस धरती का राजा हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है, and whatever. जो वैसी मेंटालिटी में उसको कहता हूँ भाई, you just teach. Because like I said, the bigger industry is not UPSC, it's teaching for UPSC. Exactly. And I think why not? Country mein it'll keep the pattern is the same, because it's the escape route. A lot of girls, for example, they graduate BCom, BSc, जो भी कर लिया अपना, BTech कर लिया, उसके बाद जॉब कर ली 1-2 साल, उनको मैरिज प्रेशर, नहीं शादी, कहते नहीं मुझे अभी कुछ बनना है. एक तो बनना में भी बहुत बड़ी बात है ना. बनना एक सबको सब कुछ ना कुछ है, which is in itself a little
क्योंकि बनने के बाद, क्योंकि मूवी की तरह सोचते हैं ना, 12th फेल की तरह बन जाऊंगा तो कुछ, ऐसा कभी नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसे. सो तो वो फिर a lot of times they go into UPSC या ऐसी सरकारी जॉब्स, क्योंकि वो इट्स लाइक अ लेयर कि अभी तो पढ़ाई कर चल रही है. वहाँ भी वो उम्मीद है. करेक्ट. सो आई थिंक मार्केट बहुत अच्छी है टू डू काइंड ऑफ बिजनेस और स्टार्ट टीचिंग एंड स्टफ लाइक दैट. One of my mentors says, हारे हुए जुआरी से ज्यादा अच्छा जुआ कोई नहीं सिखा सकता, right? And that's the real case also, because आप जो हार चुका है बहुत बार, उसको पता है कैसे हारा जाता है, तो वो बता सकता है कि अच्छा तो ये नहीं बताएगा कि जीतना कैसे है, फिर वो ये बताएगा क्या नहीं करना, क्या गलतियां नहीं करनी कभी भी. तो अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं. बिकॉज यूजुअली लोग इसीलिए कंसल्टेशंस लेते हैं, यार मेरे को ये बता दो क्या गलतियां लोग बाकी करते हैं जो मैं ना करूं. मैं जो कभी जीता ही नहीं है, आई थिंक वो हाउ विल ही और शी विल बी एबल टू टेल कि सही रास्ता ये होने वाला है. इट्स अ स्किल at the end of the day, right? Teaching is a skill, and it doesn't necessarily mean that you have to kind of really win to teach somebody how to win. What matters is, do you have the experience and expertise to know what works and what doesn't work? Okay. So for example, Gary Kirsten, who was the coach of Indian cricket team when we won the 2011 World Cup, right? Never won a World Cup on his own for his country, but he was the coach when India won the World Cup. Similarly, UPSC teaching has the same parallels. So that's the way to kind of explain. Teaching के अलावा what else can वो मेरी consultation का फीस का वो है, but हाँ, but mostly I think I'll still answer this. So mostly I think, देखिए यूजुअली इंडिया में क्या है, लोगों को ना टेक्निकल स्किल्स का बहुत वो रहता है कि मैं कुछ टेक्निकल स्किल सीख जाऊं, इंजीनियरिंग कोडिंग सीख जाऊं, ये हो जाऊं. ये नहीं होता इन लोगों से, नहीं हो सकता. एट 28 यू कांट सडनली पिक अप C++, जावा एंड प्रोग्रामर बन जाओ और पता नहीं क्या, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. सो बेसिकली एनीथिंग विच इज नॉन टेक्निकल जॉब्स येट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ communication skills, a lot of, let's say, stakeholder management, a lot of, let's say, business development, right? A lot of, let's say, client engagement, client management, account management, right? So India or any part of the world, now you go to any job market in the world you go to, it's all skill based hiring now, right? So everyone has a skill. You have some skills, I have some skills, everyone watching has some or the other skill, that they're born with. Only thing that you have to figure out is what is something that can be monetized. Right? So for people like that, there are definitely, everyone has some monetizable skill. It's just that people like me kind of just see that capability and just convert them into marketable jobs that they can kind of get, and then it's about how to get it. So can AI and automation replace these careers abhi jo hai, or will they augment it? Perfect. So this is like $1 million question. Everyone is talking about AI. मेरे को तो AI fatigue हो गया. You know what? नया word आ गया है, AI fatigue. AI fatigue का मतलब है the number of times AI is used in our conversations now is humongous. Yeah. ठीक है. Every topic, every profession. Correct. ठीक है. Now, like I always do, I'll take a little historical route to kind of draw parallels, and also show you the structure in the way it is going to pan out. Okay. Now, if you go, let's say, about 50 years in the past, okay, when personal computers came, right? Huge, big machines and servers and storages and cabling and networking and stuff like that. Obviously people thought that तब everything was handwritten, तो क्या जॉब जाएंगी, जो भी होगा, whatever. फिर इंटरनेट आया, यही लगा सबको, राइट? फिर मोबाइल आया, एप्स आई, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आया, एंड सो ऑन. तो लोगों को लगा, बट इवॉल्व होती गई, जॉब्स बढ़ती गई, राइट? अब आपको लगेगा मैं यही बोलूंगा कि AI से भी यही हो, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. सो AI is a
So this is a unique advancement or unique disruption that we are a part of right now. And this is definitely going to have a negative impact on the number of jobs, let's say, that typically, let's say annually that will come in the market, right? Now, I'll just give you some data. So there's this World Economic Forum. So for the audience that doesn't know, so World Economic Forum is basically the top-notch organization that does a lot of surveys around the world to kind of figure out, let's say, economic health, job health, growth in, let's say, wealth in people, and so on and so forth. So a lot of economic factors and, let's say, employment factors. So what they did was they, in partnership with International Labour Organization, it's called ILO. तो इन दोनों ने क्या किया 2024 में, they surveyed about 55 countries and around 2,000 plus organizations in 30 industries. Okay. So really breadth and width of the entire world. And the basis of that, let's say, report, which people can just download, it's called the World Economic Forum Future of Jobs Report, okay? 2025. Now, the basis of that report is that what do people expect should happen? What are the kind of jobs that will be displaced? And what are the new jobs that will come up? Yeah. All right. Now, the biggest takeaway, one of the biggest takeaways, it's a 500-page report. I've read it completely so that आपकी पूरी audience को पढ़ना ना पड़े. One of the biggest takeaway from that report is that 30% of jobs will be like gone by 2030. Okay. So in the next 5 years, 30% of jobs will be gone and kind of be taken over by AI, right? Now, which jobs are going to be completely wiped off are usually, it's very normal, manual jobs, also theek hai, robots वगैरह, but software engineering, for example, right? So things like, let's say, software testing, okay, right? Things like, let's say, normal जो IT services में जो 3-4-5 लाख वाली jobs हैं, IT coding वाली वो, so ये सब खत्म हो जाएगा 2030 तक. It will all be automated. There will be no such jobs in the market, right? And usually जो बढ़ेंगी jobs, there will be around big data specialists or data scientists or AI engineers, so these kind of jobs will actually flourish. All right. Now, if you look at all of the data, this survey, the bottom line is that the jobs that AI will take over or the jobs that AI will displace, okay? And the difference is, so let's say 30% jobs खत्म होंगी, तो नई jobs about 14-15% बनेंगी. तो net जो negative impact है, अगर आज 100 jobs market में आती हैं, तो 85 आएंगी. इंडिया में, for example, नीति आयोग का डेटा है 5 to 7 lakh people or students hit the job market every month. Okay. In India. Okay. It's around, which makes it around roughly 60 to 80 lakh people who hit the job market looking for jobs in India. Okay. Let's say they have X number of jobs available for these many people. It'll be 0.85x 5 years later. Okay. Right? Now, this is a little scary, right? Now, this puts us in a very unique situation. What is that unique situation? The unique situation is that historically, organizations used to say कि यार salary कम पे लोगों को उठाओ, youngsters, freshers को उठाओ, उनको train करो, experience वाले को निकाल दो, and so on. वो experience वाले को अभी भी निकाल रहे हैं, but वो youngsters को नहीं hire कर रहे, right? Because वो कह रहे हैं कि यार I don't need so many freshers to kind of join me. I'm okay with somebody who's 5, 7, 8 years experience, 4 years of experience, and I can just kind of load him up or her up with a little more responsibility and take away a lot of his or her manual tasks. So जो gap है ना between, let's say, people who are employed versus people who are unemployed, जो आज gap है
वो एक्सट्रीमली वाइडन हो जाएगा 5-7 साल बाद. वो आज नहीं पता लगेगा, वो 5-7 साल बाद ही पता लगेगा जब वो पैटर्न प्ले आउट हो जाएगा. Now what does that mean for somebody who's listening right now? So if you are graduating right now, it's very, very important that you find a job so that by 2030 you have some 4-5 years of experience. Okay. Right? So people like me, we look at what is going to be happening in the future and what can I do now to kind of prevent it. So upskilling right now, reskilling right now, looking at getting employment, getting meaningful employment in the right organizations, or maybe at least working towards that is super important. And you hear layoffs news all the time, you know, Microsoft, for example, the biggest companies are laying off people and so on and so forth. This will keep happening and increasing, yes. So one has to, and that makes job search and career coaching very important. Again, like I said, it doesn't mean you get disheartened कि अरे यार job भी जाती ले, अरे तो be ready ना. Gone are the days when the only skills you wanted were कि हाँ मैंने कोडिंग सीख ली, अब मेरे को जॉब मिल जाएगी, बिकॉज अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, IT का ही तो इंडिया. अब कितने कोडर हो गए, कितने इंजीनियर हो गए. What are you better at than the other one? Are you more like structured in your thought process? Do you know what kind of companies to work for? Are you layoff ready? Right? So I think these are some things that everyone should kind of focus on to make sure that they are. हम इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, health insurance, life insurance. We don't take insurance just because we want to use it. Nobody says, "अरे यार मैंने प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस का यूज ही नहीं हुआ." You'll never hear anybody say कि पैसा वेस्ट हो गया, मेरा यूज तो हुआ नहीं. People take insurance to never use it. Right? It's a rainy day umbrella. Similarly, जो मुझे स्किल्स चाहिए जॉब के लिए वो तो करना ही है, उसके लिए तो अपस्किल होना ही है, बट मुझे मार्केट में अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए भी अपस्किल होना है. राइट. सो दिस इज वन ऑफ द की टेकअवेज फ्रॉम दिस AI क्वेश्चन, बिकॉज AI से डरने की कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू वर यंग, आप स्कूल में थे, सडनली यू नो बायोलॉजी आ गया सब्जेक्ट 6th-7th क्लास में, मैथ्स में मुश्किल होता चला गया आगे, राइट? और आपने केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम कभी पढ़ी होगी, फिजिक्स कभी फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी. तो नॉट एवरी लाइक सब्जेक्ट वाज very, you picked up very quickly, right? But you eventually did, you passed exams and so on. Similarly, just treat it as in life this is another subject कि अब मैं एक class आगे जा रहा हूँ, this is a new subject that will come up and just go with it basically. Okay, so how can anybody just upskill their I mean जो भी काम कर रहे हैं उसको upskill कैसे कर सकते हैं? Right, so this is again very important question. So people usually expect कि यार मेरे को बस कोई फैंसी सा ना कोर्स बता दो, सर्टिफिकेशन बता दो जो मैं कर लूँ और मैं अपस्किल हो गया और फिर मैं वो सर्टिफिकेशन दिखा दूंगा और मेरी जॉब लग जाएगी. ठीक है, पीपल गेट वेरी लाइक दिस इज द लेवल ऑफ लेट्स से आई वुड से एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल है, बिकॉज वही मैंने जैसे बताया ना शुरू से एजुकेशन सिस्टम कि कॉलेज स्कूल करा, अब कॉलेज कर ली, डिग्री आ गई, डिग्री से जॉब मिल जाएगी. पहले मिलती थी ना, अब नहीं मिलती. IITs में भी नहीं मिलती, डिग्री से नहीं मिलती जॉब. फिर सर्टिफिकेशंस का जमाना है यार, 2010 टू लेट्स से 2022 सर्टिफिकेशंस कर ली, उससे कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती. अब सर्टिफिकेशंस भी कितनी करोगे, पूरा वो बन गया है. मतलब दिस एन एंटायर इंडस्ट्री, राइट? Udemy, Coursera, ऑनलाइन कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है सर्टिफिकेशन करने में? सर्टिफिकेशन करने में कोई बड़ी बात नहीं रह गई अब, राइट? सो व्हाट यू हैव टू not look at is an outcome of a certification, first of all, right? You have to first understand structurally that whatever job that you are in, right, what are the, let's say, the implications of AI on my job. ठीक है. Now दो तरह की implications होती हैं, एक output की implication होगी, एक input की implication होगी. Output की implication क्या है कि अगर मेरा कुछ manual tasks हैं जो automate होंगे तो उससे मेरा आउटपुट कैसे बढ़ेगा. एंड इनपुट का मतलब है दैट वॉट एवर जॉब दैट आई एम डूइंग, ठीक है, और लेट्स से सम सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर आई स्टार्ट यूजिंग, या सम लेट्स से Gen AI प्रोडक्ट
I'm using right now, etc. How much time is it saving me, and what can I do with that time? So ये दो questions का first of all you get an answer, right? Now once you get answers to that, you then look at basically if somebody, let's say, is in a marketing manager role in an FMCG company, right? Now this marketing manager usually right now till now was working on, let's say, creating ad campaigns, right? Or partnering with different vendors and looking at click-through rates of their ads, or looking at leads that they were generating, etc., 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 right? Now what they have to now look at is, how do I automate these, let's say, lead generation activities? How do I, let's say, negate vendor ecosystem altogether? Are there softwares that I can kind of learn which basically directly do it, right? So that is something that will help, right? Rather than just thinking कि अच्छा एक particular एक certification होगी जो सब लोग कर लेंगे, या 5-2-4 certification जो सब लोग कर लेंगे और उससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. It will be different for everyone, literally everyone, right? And depends on the company that you work for, the industry that you work in, the role that you are in, the rank that you are in, right? Because maybe, for example, if you're somebody who's a senior vice president, it might just be the case that your whole job is to make decisions all the time. You just get paid to make a decision, and that's what it is. So you necessarily just want to look at, अच्छा जब AI आ जाएगा तो मैं जो डिसीजन लेता हूँ A वर्सेस B, तो उस डिसीजन में क्या फर्क पड़ेगा विद, लेट्स से, Gen AI products और let's say technology and so on and so forth. तो implications, output and input को समझना बहुत जरूरी है अपने जॉब से कॉन्टेक्स्ट में, अपने जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली. एज यू मेंशन्ड कि अब इतने साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, लाइक मोर देन 75 ईयर्स. इसके बाद भी इंडिया में बहुत बड़ा हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर पे या कहीं पे मोर्चे निकल रहे हैं कि इंडियन यूथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? एंड इसके बाद जब हम बात करें किसी एम्प्लॉयर से, उनकी प्रॉब्लम रहती है दैट वी आर नॉट गेटिंग गुड employees, right? कि it's a very tedious task to find somebody who's good at their work, right? And दूसरी तरफ से प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये बीच में गैप है कहाँ पे? सप्लाई एंड डिमांड का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So much so, I'll tell you very very frankly. So let's say there is an organization looking for, let's say, 5, 6, 7 years of experience, 50 lakh का पैकेज. ठीक है. एंड वो मार्केट में जाता है तो टिपिकली सोचा जाए तो इतने लोग हैं देश में, 50-60 लाख रुपए मिल रहे हैं, 6-7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कितने IIT IIM पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं. तो रिक्रूटर को तो बहुत आसानी से मिल जाने चाहिए लोग. Exactly. मतलब कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, naukri.com या आपके Indeed, Monster, वहाँ पे कहीं से भी CV डाउनलोड करो, फिल्टर डालो, आई नीड 30 to 40 lakhs का करंट CTC, दिस जॉब टाइटल, दिस लोकेशन, दिस स्किल्स, दिस इंडस्ट्री एंड सो ऑन. कुछ आएंगी प्रोफाइल्स आपके सामने, कॉल करो, इंटरव्यू करो, हो जाना चाहिए. 70% प्लस जॉब्स जब 50 लाख एंड अबव इन इंडिया, किसी भी कंपनी का खुद का रिक्रूटर हायर नहीं कर पाता. उसके लिए वो रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को वो मैंडेट दे देते हैं कि यार आप ना ऐसा करो, ये 50 लाख का रोल है, आप इसमें से 10 लाख रुपए रख लेना एज अ कमीशन, और हमें बंदा ला दो ढंग का जो हमें ज्वाइन कर ले. मतलब कॉस्ट ऑफ हायरिंग can be 20, 25, 30, 40% also in senior roles of the total CTC. और ये भी पक्का नहीं है वो 2 महीने टिके ना टिके बंदा. हो सकता है वो 60-70 1 करोड़ रुपए कमाते, उसको कोई यार से ऑफर आ गया, वो कंपनी ने खर्च किया 30-40 लाख उसको सिर्फ हायर करने में, किसी और को पैसे देके, एंड वो छोड़ के भी चला गया. राइट नाउ व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द इंडियन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इज दैट एक पर्टिकुलर सैलरी से नीचे लोग हायर कर लेते हैं बहुत आराम से. सो लेट्स से 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक ये जो जॉब्स होती हैं मार्केट में, ये इजीली हायरेबल हैं. आपको स्ट्रगल करने को जरूरत नहीं पड़ेगी. रिक्रूटर्स नहीं करते इन रोल्स में स्ट्रगल. क्यों? आप लिंक्डइन का कोई भी पोस्ट देख लो, उसमें लिखा होता है 100+ एप्लीकेंट्स, 200 एप्लीकेंट, 500, 1000, 200, 2000.
तो ये जो जॉब्स होती हैं जो 50,000 1 लाख 1.5 लाख तक की जो जॉब्स होती हैं महीने की सैलरी की, ये बहुत चर्न वाली जॉब्स होती हैं. मतलब इसमें हो सकता है कि 6 महीने साल 1.5 साल में यू कैन कीप रोटेटिंग दीज जॉब्स एंड टिपिकली ये लोग ज़्यादा हैं मार्केट में. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर तबके में प्रॉब्लम नहीं है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 to 7 लाख पीपल हिट द जॉब मार्केट इन अ मंथ. ठीक है, into 12 is 60 to 80 lakh basically people in the market right now. उसमें से according to नीति आयोग, तो क्यों ही बोले, why would नीति आयोग say this, but according to corporate circles, let's say some global organizations that kind of keep doing surveys, about 5 to 10% people are employable. Okay, because of lack of skills, they don't have the right, let's say understanding of how jobs work, what they have to do, how to kind of get a job, interview करना नहीं आता, and so on and so forth. Yet it is 5 to 7 lakh people. 5 to 10%. इंडिया की बढ़िया बात पता है क्या है? इंडिया में हर चीज ज्यादा है. ठीक है, बिकॉज आप सोचो ना कि इंडिया में हम इतने लोग हैं, आप कोई भी छोटे से छोटा कोहॉर्ट उठा लो, उसमें आपको ज्यादा लोग मिलेंगे. कि इंडिया में कहते हैं ना गरीब देश है बट बिलियनियर्स बहुत ज्यादा हैं. राइट है ना? वो क्यों है? क्योंकि हम लोग ही बहुत ज्यादा है. तो पॉपुलेशन का बाय प्रोबेबिलिटी विल बी in every aspect will be a lot more people, right? So जो ये low level jobs है ना, 5 to 15 20 lakh वाली jobs हैं, यहाँ पे रिक्रूटर स्ट्रगल नहीं करते हैं. इट्स अ मिथ. नहीं करते हैं वो लोग. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इतने लोग हैं टू काइंड ऑफ गेट दोज जॉब्स. दे आर एबल टू फिगर आउट ओके इतने में हो जाएगा. 2-4 लोग आउट ऑफ 100 200 500 पीपल ठीक ठाक मिल जाएंगे. अल्टीमेटली एक ही बंदा हायर करना है फॉर वन रोल. 500 बंदों ने अप्लाई किया, एक तो ढूंढ ही लेगा ना वो. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन लाइफ. ठीक है, आफ्टर 20 lakhs, क्योंकि आई डोंट नो आपके ऑडियंस बेसिकली मे बी बहुत यंगस्टर्स देख रहे होंगे एटसेट्रा. सो 15-20 lakhs तक मारो मारी है. मतलब बहुत स्ट्रगल, कंपटीशन, इसमें अपस्किलिंग रीस्किलिंग, क्योंकि कॉलेजेस में नहीं सिखाते, राइट? तो वो हम बात कर चुके हैं, सो मैं रिपीट नहीं करना चाहता वो बातें. तो अपस्किलिंग रीस्किलिंग करके यू कैन, ऑब्वियसली हार्ड है, डिफिकल्ट है टू गेट देयर. बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आपको 20 से 50, 50 से 1 से 1.5, 2, 2.5 करोड़ तक की जो सैलरीज है ना, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वहाँ प्रॉब्लम क्यों है? वहाँ ये प्रॉब्लम, इसी जो ले ऑफ्स होते हैं ना, वो आप देखना ऐसे नहीं होते कि उठा के पूरी इंजीनियरिंग सेटअप ले ऑफ कर दिया. ऐसे कभी नहीं होता. अगर माइक्रोसॉफ्ट 6,000 लोगों को ले ऑफ कर रहा है इंडिया में या ग्लोबली, तो उसमें से मोस्टली लोग मिडिल लेवल या फिर सीनियर लेवल पे हैं. तो 6,000 में से ऑलमोस्ट 60% वर प्रोडक्ट मैनेजर्स, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स, जिनकी सैलरी 8-80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ थी. बिकॉज आई नो फ्रॉम माई कंसल्टेशन एटसेट्रा. Similarly, sales leaders were laid off and so on and so forth. So what I'm trying to say is कि जो रिक्रूटर और इसका जो गैप है ना, वो हमें क्यों लगता है या सुनने को मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो मार्केट में न्यूज़ आती है ना, कोई भी सेंसेशनलाइजेशन आपको करनी है ना, वो होगी इतनी सी बात, वो बड़ी लगती है. 6,000 लोग ले ऑफ हुए. 6,000 फॉर अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट विच हैज मोर देन 2.5 lakh पीपल इज जस्ट 2%, 1.5%. Not even that, right? Just speck of dust in the entirety of, let's say, such a large organization. Yep. So this gap actually exists in mid to senior employees. And why does it exist? It exists because they are outdated. They become outdated after a time, after a point. Because of new technology, new ways of working, they want more, let's say, cohesion between, let's say, them and Gen Z and stuff like that. They want थोड़ा younger talent and so on and so forth. तो इस वजह से वो हो जाता है. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि एक तरफ जो यंगस्टर्स हैं उसमें ऑटोमेट हो रही हैं जॉब्स, a lot of manual kind of jobs are taken away. Plus people in the mid to senior section, वो बहुत जल्दी उनका करियर खत्म हो रहा है. Sustaining careers is super difficult. ठीक है, तो हेंस जो शुरू का 10-15 साल है उसमें आप स्ट्रगल करते हो. और उसमें स्ट्रगल का ये मतलब नहीं है कि आप बस
एक ही चीज़ में मेहनत करते जा रहे हो, आपको यू टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, यू नो, रीस्किल योर सेल्फ, गेट न्यू like technology ideas, or let's say get अब AI का for example, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि you know look at implications on your job and so on and so forth. तो मैं ना easy way out नहीं दूंगा आपकी audience को कि जाके LinkedIn learning पे या फिर ऐसी जगह पे उस पे वहाँ पे LinkedIn learning पे क्लिक करो, वहाँ पे कोर्स पे क्लिक करो, ये सर्च करो AI for project managers, you can do that. It's very easy. AI for project managers, look at the 5 courses that come and start doing it. This also has to be done, by the way, but not mindlessly. That's all for today's first part. We didn't want to overwhelm you with too much goodness at once, so we'll be wrapping up this conversation in our next episode. In the meantime, we'd love to hear from you. Share your opinions in the comment section below. Don't forget to like and share this episode with your friends and family. Your support means the world to us. Thanks for tuning in, and we'll catch you in our next episode.